Rahim, Ejaz Nisar, President CEO Club Pakistan, आपके साथ हाजिर है. Today we have an exclusive session, Coffee with CEO, with the one and only very young and bright-faced CEO Haseeb Rehman. Haseeb Rehman is the Chief Executive Officer of High Tech Foods, oil and ghee company, and special the brand Sharjah. Sharjah is the brand in the oil industry, and especially is a very fastest growing company in Pakistan in this especially oil industry. And we ask few questions, the reasons of their success, and especially the young leadership behind this success. Over to Haseeb. Haseeb, thank you very much for giving this time. Share with us. Thank you so much for having me. Thank you very much. Just share with us, Haseeb, your a little journey. You just ended up as a CEO. Which were the struggles, the pain points, and the price point of this your high tech, and especially focusing on the Sharjah? Over to you. Right. So my journey, I think, with work started as soon as I was 16, because I think while I was studying, and by the way, I just want to tell you that I was a very, very bright student, scholarships and stuff, but even then I always had this excitement to kind of like work and give back to Pakistani society. So I always wanted to kind of like do something that has a bigger impact in terms of job creations, in terms of employment opportunities, in terms of kind of like giving back to society. So I think while I was a teenager, I had this interest on doing something. तो मैं अपने किसी मेरे चाचा हैं उनके साथ में बिजनेस में साइड बाय साइड ट्रेडिंग कर रहा होता था या चीजें कर रहा होता था, एंड स्टॉक्स में ट्रेड शुरू किया. No, I'm not but I'm a sheikh, by the way, Sindhi sheikh, and we are also a very strong community, just like Memons, कि हमारी भी बड़ी वो associations बनी हुई हैं यहाँ पर. Yes. So बड़ा वो उनकी presidents होते हैं and everything, events चलते हैं. Anyway, so I was as a teenager, I always had an interest, and then I did this trading of edible oil from very young age. तो जब मैं यूनिवर्सिटी में भी होता था, I've studied from IBA. I've done my BBA from IBA. So when I was in university also, तब भी मैं साइड में कभी कभार I would like sometimes in classes में देख रहा होता था मार्केट की क्या पोजीशन है, and I would just trade and I would just try to understand the market and phenomena. And that's how I think that this whole journey of high-tech oil and ghee mill started, because this factory came into being in 2014. 2014 is when we incorporated this company, and 2015 is when I graduated from IBA. So technically there was like see what overlapping journey rahi hai, in a way that like उस वक्त idea ये था, very small idea, that हम trading करते हैं तो हम क्यों ना अपना क्रूड ऑयल खरीदें, उसी को रिफाइन करें और फिर सेल करें. Like that was the idea. That is how it started. And so when I graduated and when I came in here in the company full time, that's when I realized that yes, trading is good. I mean, you get good profits, you have good margins, but but then आपका कोई brand या कोई आपकी identity नहीं बनती उससे. So that's how this whole journey of Sharjah cooking oil started, and Sharjah Banaspati started. And I think first 6 months it was all back end पे पूरा काम in terms of developing the product, उसके brand की image क्या होगी, perception क्या होगी, क्या marketing strategies रहेंगी, how should the brand look like, क्या हमारा markets, go to markets कौन सी होंगी, कौन सी categories और कौन से segments में हम काम करेंगे, price indexing क्या पूरा R&D किया. So पूरा वो 6-7 months was like complete work on that. And I clearly remember it was 28 Feb 2017 is when I kind of like first vehicle was dispatched from my factory. So it's been just 5 years since the development. And so during this your branding and launching, and you also did your MBA from University of Manchester. Yes, so that's how you managed. How did you manage? So that's also very interesting. So because I've told you in the very beginning of this interview that I was a bright student, I still consider myself a very good student. So I've had this interest about
I think a good way to describe myself would be that I'm very curious. And एक होता है ना कि certain goals होते हैं in mind कि यार ये चीज तो करनी है. So MBA was this goal that I was like, you know, बहुत early on था कि ये MBA करना है and शादी करने से पहले करना है. Very you know, different way of coordinating this, but I just thought that, you know, after a while, after I'm settled down, or maybe, you know, I'll have a family like that, then it might just get very, very difficult. So I have to do it. And because I got so busy with this Sharjah ki development, so it was very difficult for me to kind of leave work. So I did a very interesting, again, R&D kiya, and I joined a very interesting program called Global MBA. So what was interesting about that, Jasa, was that I was attending workshops every quarter in different part of the world. So I went to China, I attended workshops in Singapore, I attended workshops in Hong Kong, I attended workshops in Manchester. So I was doing workshops all around the world, meeting all kinds of people, wow, networking, and then, you know, and then COVID came. So then COVID came, so I did like my last semester was done online, but rest of it was like all around traveling the world and everything. MashaAllah. So you did it. I did it. I did it. 3 दफा ग्रेजुएशन जो है ना हमारी पोस्टपोन हुई. बहुत चैलेंज था वहाँ जो क्वारंटाइन करना पड़ता था. Yes. Very very challenging. एक दफा तो ये हुआ कि हम लोग everything was booked and just 4 days back they just cancelled the graduation. But I was very excited to kind of do it, and I recently had my graduation there. अब हमसे ये भी पूछते हैं हसीब से कि हसीब 3 times told I'm a bright student. तो bright students की रिसर्च कहती है जो bright students होते हैं वो बड़े humble husbands होते हैं. Is it so? Ask my wife, but I क्योंकि वो ना very down to earth, क्योंकि वो बड़े अच्छे होते हैं, सीधे साधे डिसिप्लिन्ड होते हैं. But मैं हूँ. कैरी फॉरवर्ड. आपने ये जो ब्रांड्स की बात की, मुझे ये बताइए हसीब कि ब्रांडिंग क्योंकि इज वन ऑफ द एरिया पीपल इन पाकिस्तान लैक. People know only about sales and marketing. They don't know branding and their positioning and their perception in the market and the long-term perception. तो हम इस हसीब से पूछते हैं कि उन्होंने ब्रांडिंग एक आम सा इतनी बड़ी मार्केट में जहाँ इतने बड़े बड़े हबीब कुकिंग ऑयल, सूफी, ब्ला ब्ला, इतनी बड़ी मार्केट में अपनी नीश, अपनी जो शेफ के ऊपर स्पेस कैसे मैनेज की, क्या स्ट्रेटेजी थी? को 2-3 हम इनसे कुछ गुर सीखते हैं. अब टू यू. Thank you so much once again. I think अगर मेरे कंपेरेटर्स ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो कुछ भी बोलने वाला हूँ ये सही नहीं है. ये बिल्कुल ना करें. Please. But anyway. जो बोलना सच बोलना. सच के सिवा कुछ नहीं बोलना. No, I'm kidding. I think but what I'm trying to say is that I think अपने शेल्फ में अपना स्पेस क्रिएट करने के लिए you have to give consumer a reason to believe. So I think what we started doing was कि because oil चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो वो पैक्ड होता है तो कंज्यूमर उसको सही तरीके से डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, या उसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट या तो उसका प्राइस होता है या उसका जो एक आउटलुक, लुक एंड अपीयरेंस है, वही 2 फैक्टर्स होते हैं. तो येस वी वर्कड ऑन प्राइस एज अ फैक्टर बिकॉज वी इंडेक्स्ड इन द वी डिडंट गो फॉर अ प्रीमियम सेगमेंट, वी वेंट फॉर अ मिडिल कैटेगरी वाला पॉपुलर सेगमेंट में, लेकिन पॉपुलर सेगमेंट में टॉप टियर के ऊपर. So, but that's also the journey that, you know, we kind of like went ahead and then, you know, giving them that packaging and giving them a reason to believe. So like, you know, if you look at our product, there is a seal developed key, which is a promise to our consumers that, you know, when you consume our product, you will become happy, healthy and strong. So that's the RTB that we are selling. So we are telling a consumer कि आप ये product अपने घर में ले जाएं, इसको यूज करें, you will be happy, healthy and strong, you will pay less price and you will get exactly the same quality. ठीक. So that's the kind of promise that, you know, the promise was sold. That promise the bought. Yes. तो आपने इसको अब इस वक्त क्या माशाल्लाह आपकी अगर मैं पूछूं करंट सिनेरियो में क्या है, क्या आपका सक्सेस है, क्या ये वर्क किया, ये जो स्ट्रेटेजी बनाई और इसकी ग्रोथ आजकल रीजनल से नेशनल लेवल पे आपने जंप किया, और आगे फ्यूचर नेक्स्ट 5 ईयर ट्रेजेक्ट्री ऑफ ग्रोथ क्या है?
Say so. Right now, just recently, we won fastest growing award, for our brand in the cooking oil category, brand of the year. माशाल्लाह से हमें वो award से नवाजा गया, and we were like very happy, and the reason for doing that was because हमने just recently अपने brand को nationally available कराया है at all major stores, all the distributors and everything. So इम्तियाज के किसी भी आउटलेट पे आप जाएंगे तो शारजा कुकिंग ऑयल आपको मिलेगा, चेज अप हो गया, right? So like the strategy Ijaz sahab has always been to kind of like move slowly, because जब आप slowly and gradually move करते हो तो वो sustainable growth आती है, long term growth आती है. मैं अपने sales वालों को भी यही बोलता हूँ, जब भी वो बताते हैं कि हमने certain targets achieve किए, मैं ये कहता हूँ उनको कि this is not the achievement. Our achievement would be that living up to those targets for the next year and for the coming quarter, and then succeeding and surpassing that, because I feel that we are our own competition. So I tell them that हमारा competition ये कि we are just a 5-year-old brand, so we cannot compete with 40-year or 25-year-old brands in the market. What we can do is कि whatever we achieve this year, हम अगले साल उससे बेहतर करें और अगले साल उससे भी बेहतर करें. हसीब से हम पूछते हैं कि हसीब, ये जो इंडस्ट्री है आजकल, हर बंदा जो ना कंसर्न है इन्फ्लेशन से, क्योंकि इन्फ्लेशन इज बाइटिंग ईच एंड एवरी पर्सन इन पाकिस्तान. तो एक जो कुकिंग ऑयल था, अचानक इसकी प्राइस अब 600 को टच कर गई है पर केजी, और इसके अलावा इसी तरह बनास्पति है, ऑयल की दूसरी जो वेरिएंट्स हैं. तो हम ये पूछते हैं कि क्या इनके पास भी बहुत पैसे आ गए हैं, इन्होंने बहुत पैसे कमाए हैं इतनी प्राइस हाइक होने, और क्या वाकई पैसे कमाए हैं, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, क्योंकि इंपोर्ट डॉलर बढ़ने से इनके भी बड़े सर्टन चैलेंजेस बढ़ चुके होंगे. तो पूछते हैं हसीब की कंपनी ने, शारजा ने, और कितने पैसे कमाए सर जी? Interesting question. अंदर की बात अब पता नहीं. Moving on. No, but I personally feel that last 1.5 year has been very, very challenging for all the businesses throughout in Pakistan, because inflationary pressure worldwide बहुत ज़्यादा रहा है, and it has transferred into Pakistani economy as well. And हमारे लिए वो inflationary pressure ज़्यादा इसलिए भी रहा है because हमारी पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी gradually, then हमारे डॉलर जो है वो, हमारा रुपी अगेंस्ट डॉलर जो है वो डेप्रिशिएट हुआ. So that has added fuel to the economy. Right now our CPI index is sitting at almost 20% जो recent month का आया है. तो it is at a very high level. So मतलब वो हम उसमें देख रहे थे कि onion prices for example compared to last year has increased 155%. Ghee prices have increased almost like 70%. So इस तरीके से prices जो हैं वो आम कंज्यूमर के लिए तो वो चैलेंजिंग डेफिनेटली है ही है, बट एज सीईओज एंड एज बिजनेस ओनर्स हमारे लिए भी बहुत चैलेंजिंग है. बिकॉज देन यू हैव टू रिटेन योर एम्प्लॉयज. तो आपने जो आपका एक गुड टैलेंट है, आपने उनको रिटेन करने के लिए, बिकॉज उनके खर्चे भी बढ़ गए हैं, तो आपने उनको कंपनसेट करना है, आपने मीडिया अप्रेजल्स करने हैं, आपने मीडिया रिव्यूज करने हैं, डिफरेंट आपने वो आपकी सैलरीज फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज होती हैं. अदर देन दैट जो पैकेजिंग कॉस्ट है, सिर्फ घी की प्राइजेस नहीं है, पैकेजिंग कॉस्ट में फॉर एग्जांपल प्लास्टिक की प्राइसेस बढ़ गई, तो आपकी जो बॉटल्स जिसमें जाता है, या जो कार्टन्स के वो जो पाउचेस जाते हैं उनकी प्राइसेस बढ़ गई, कार्टन्स की प्राइसेस बढ़ गई, हर चीज, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ गई. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, एंड टू अ पॉइंट वेयर right now I personally feel that not everybody, I'm speaking for every oil and ghee industry at this given point, that we haven't transferred 100% of our increased impact to the consumers or to the market as yet. वो आपने वो उसका जो मार्जिन कम कर दिया, आपने अपने मार्जिन्स कम करके अपनी चीजें, बिकॉज ऑब्वियसली मार्केट इंटरनेशनली बढ़ी भी, तो वहां से आपको जो आपने कुछ मार्जिन्स जो है वो अपने पास रख के आगे पास ऑन के लिए, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज गेटिंग वेरी वेरी हाई. और इसके अलावा जो कंज्यूमर पे जो प्रेशर इस वक्त कंज्यूमर्स का जो इन्फ्लेशन तो वो 20% प्लस चल रहा है. यस, अभी जो इम्पैक्ट आना है 25% कंज्यूमर्स पे. बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल उसमें सस्टेन करना एक आदमी की जो बाइंग जो उसकी कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, 100%, उसकी जो इंडेक्स आ रहा है. हसीब से हम आगे चलते हैं, ये पूछते हैं कि माशाल्लाह इतना यंग सीईओ है, इसका विजन क्या है? इसने माशाल्लाह 5 साल में कंपनी इतनी खड़ी कर दी, अगले 5 साल में मुझे लग रहा है ये एक्सपोर्ट भी कर रहा होगा. तो व्हाट डू यू सी 5 years एंड स्पेशली फोकसिंग ऑन एक्सपोर्ट्स?
Sir, I mean, if I have to speak for my company, I think I keep saying this to everybody that we have to continuously develop, innovate, and मतलब develop करना है, innovate करना है और successfully develop करना है अपनी company को. Expansion है तो पंजाब वाली साइड पे, पेशावर केपी वाली साइड पे आप इसका Yes, so we recently we have opened our warehouse operations in Multan. I'm traveling next week and we are in the process of opening our operations in Lahore also in terms of like opening up the warehouses. But factory से दूसरी जगह आने के लिए दुआ करें. कि आगे तो कहते हैं opportunity और entrepreneur जो होते हैं वो problems में opportunities ढूंढते हैं. जी बिल्कुल ऐसे ही है. I mean, मैं अगर आपको अपनी कोविड वाली सिनेरियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, I'll be going back to that. But when COVID happened, so I was in mid of doing my MBA. Then this whole COVID and this new scenario of doing things had come into place. And interestingly, at that given point, I had done some management changes in the company. So the top person who were kind of like, managing the operations at the factory level had changed. Like, it was a change of management hua tha. So at that given point, it just felt like that everything's coming, all together because आपको assignments भी करने हैं, आपको ये, MBA का साथ में साथ पढ़ाई भी करनी है, then आपको ये चीजें भी काम भी मैनेज करना है, फिर जो नए लोग आए हैं उनको एडजस्ट कराना है इनटू द कंपनी और जो ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे हैं वो एक्सेप्ट करें एक न्यू लोगों को और न्यू मैनेजमेंट को. सो इट वाज वेरी वेरी चैलेंजिंग. बट अगेन वही वाली बात है कि व्हाट इज लाइफ विदाउट चैलेंजेस. And मैं समझता हूँ कि I get it's a very, maybe it will be weird, but I actually get happiness and I actually derive a lot of satisfaction when there's a lot of chaos happening around, when there is like so much movement. ये काम है कि ये कर दो सर इसका क्या होगा, like things like this. When this, because then it's like maybe you're doing something right, like कुछ movements जो चल रही होती है ना, जब काम नहीं होता, जब फैक्ट्री में एक दो गाड़ियां दिखती है ना और कोई मूवमेंट नहीं दिख रही होती तो I just get a little gloomy and sad कि यार ये क्या. So yeah, so that's the. हसीब से पूछते हैं कि what is entrepreneurship, क्योंकि he's माशाल्लाह शेख फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और मेमन्स और शेख तो बॉर्न उनके डीएनए में एक बिजनेस होता है. 3 competencies for an entrepreneur would be that I think they have to be definitely team players. They need to know how to work with different people and different teams. And another competency that a good entrepreneur should have is that good emotional intelligence. In order to like managing their emotions and kind of like looking for like in terms of like managing their anger, their stress, and kind of like trying to find having some, I would say like having like in terms of के एक ऐसा outlook होना चाहिए that you're trying to kind of like resolving the issues, solution oriented basically. Conflict resolution जो है that is very very important. बेचारे ने problem सुबह आता है, he has to eat the frogs on table. फ्रॉग मीन के मतलब प्रॉब्लम सामने पड़ी होती है, उसने उसको सॉल्व करना हो. मैं अपने जो भी मेरे डायरेक्ट रिपोर्टीज हैं, सो आई हैव अ वेरी कॉर्पोरेट ऑर्गेनोग्राम एंड स्ट्रक्चर इन माय कंपनी दैट देयर आर ओनली 7 people who directly report to me and rest there is like I've just told them that this is how you guys manage it, because मैंने from the scratch जब ये पूरी operations और चीजें हुई हैं तो मैंने टैंक्स पे खुद चढ़ के भी ऑयल की डिप्स ली हैं. So I've gone through that whole journey. So now I'm at a place where I'm like, you guys come in and take charge, because now I need to go on and develop some more business. So that's when there was a lot of focus on our B2B aspect. Right now we are the major contractors with Pakistan Army as well. We are supplying cooking oil and ghee to all their major bases. So that's also now our major jump. So these are all the focus areas for me. तो मैं अपने टीम प्लेयर्स जो भी मेरे साथ जो डायरेक्ट रिपोर्टीज भी हैं मेरे, तो मैं उनको यही बोलता हूँ, मैं कहता हूँ there are only 3 skills I need in you. One is that you need to be team player.
Second is that you need to be solution oriented, and third is that you need to have an integrity, because these are the three things that are very, very important for any person. So I would just believe कि अगर मुझे if I have to kind of like tell you that three major important characteristics for an entrepreneur is that he should be true to his job. He should definitely, just because he's an entrepreneur, I mean, it doesn't mean that he can come in and buzz off anytime he wants. Yes, he can do that, but he should be very much have that outlook on work कि वो काम कि give back kind of a thing. So वो होना चाहिए, team player हो definitely, and solution oriented हो. हम ये पूछ रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर्स आजकल पाकिस्तान में द मोस्ट जो होते हैं ना बेचारे वर्किंग अंडर प्रेशर एंड स्ट्रेस, तो हसीब से पूछते हैं कि इसकी कोपिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं, हाउ ही मैनेजेस हिज स्ट्रेस. Sir, in order to manage my stress, I actually go for a good swim. Like, sure. That's literally what I do. I think it has been the most relaxing thing Exercise, for me. Yeah. But वही वाली बात है कि at times there are there are times where you cannot actually take out time from your work schedule to go out to kind of like do some kind of exercises or do something. तो फिर आपको you have to kind of like, I think, train your mind in such a way that maybe sometimes watching Netflix is relieving stress. So like whatever little you have, you kind of like कौन सा सीजन देख रहे हैं? I mean, recently I just finished Ozark recently. I love that show. Absolutely love that show. I'm planning on watching Peaky Blinders. So that's there. But वो उसके लिए भी sometimes वो हो रहा होता है. On Sundays I just go out and play golf. So things like these. कुछ थोड़ा सा कहीं ना कहीं जब भी टाइम मिलता है कुछ ना कुछ कर लिया, एक्टिविटी चल रही होती है. हसीब से पूछते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो रोल मॉडल्स, मतलब ही इज अ यंग मैन तो ही नीड्स मेंटोरिंग एंड कोचिंग, तो हु इज 2-3 रोल मॉडल्स इनसे पूछते हैं वो कौन है जिनसे ये सीखते हैं? आई थिंक बहुत ऑर्थोडॉक्स लगेगा ये जवाब, बट आई थिंक माई biggest role models are my mom and dad, to a point that wow. I mean orthodox nahi hai ye real hai, yes, but I mean to a point where I think I tell this to everybody that I like one of the very fortunate ones that our parents मतलब हम जब मेरे अपनी बहनों से भी बात हो रही होती है, हम डिस्कस कर रहे होते हैं that how we are so fortunate that our parents kind of like have given us the right kind of I would say liberty in terms of doing things, and वो एक authority and वो power भी कि for example अगर मैं business कर रहा हूँ तो I at a very young age where for example sometimes I think and I'm like when I am that years old, क्या मैं अपने बेटे या बेटी पे इतना ट्रस्ट करूंगा जितना मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर करते हैं at an age where I haven't done anything and proved them कि I'm capable of running a business या कुछ तरीके की चीज. So I think I mean I just look at them and I'm just like this is how I want to be as a couple, as a business woman, businessman, as people. They are my role models for everything. रिसर्च कहती है कि जो CEOs होते हैं वो ग्लोबली 60 बुक्स इन अ ईयर वो रीड आउट करते हैं. हम हसीब से पूछते हैं कि माशाल्लाह वर्कशॉप्स ग्लोबली इन्होंने UK, ऑस्ट्रेलिया और पता नहीं कौन से कंट्रीज में गए हैं, तो which 3 books you recommend कि जहाँ ये मेरी one of my books which close to my heart? One of the books that is actually very close to my heart, which I actually studied at a very, very young age, was that 7 Habits of Highly Effective Teenagers. So that is one thing that was like, that stick to me, and till this day, I kind of like try to reiterate those values into my life, in terms of being a good listener, in terms of being like a win-win situation type of like carry out karne mein. In fact, to a point where like I think it has helped me. That book has tremendously helped me, and I think just reading that at that right age is what I think helped me a lot. Other than that, I was a crazy fiction fan. Yes, so I love Dan Brown. I've studied all Dan Brown books. So but I think I kind of like need to like
gained that habit of reading fiction books now, because now I moved to watching Netflix and Amazon. ये वो उधर चला जाता है वो fiction देखने में and everything. So वहाँ पर I would say that's something. So yeah, these are like इस तरीके की ऐसी. See, before ये second last question है, where do you see Pakistan as a country, as economy, क्योंकि बहुत challenging situations हैं. Being a CEO, you must need to know about the macro picture. तो बहुत ज़्यादा इस वक्त difficult पाकिस्तान कहते हैं ना अपने नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है. तो where do you see Pakistan economy next 5 years? I personally feel that Pakistan has a very, very big potential in terms of, because I have done my internships when I was in IB. I did my internship in Dubai. I have worked in Turkey as well. So I have globally worked in different scenarios in different countries, and my experience from learning, working over there and seeing things and is that जो हम पाकिस्तानीज जो हर दफ़ा अपने कंट्री को कंपेयर कर रहे होते हैं विद डिफरेंट कंट्रीज इज़ फ्लॉड. वाई? बिकॉज हमारी 22 करोड़ लोगों की आवाम है और हम कंपेयर कर रहे होते हैं अपने कंट्री को टू अ यूरोपियन कंट्री या टू अ दुबई और टू अ कतर, जिनकी मतलब उस कंपैरिजन में वो पॉपुलेशन नहीं है और रेवेन्यू इतना ज़्यादा है कि वो जीडीपी पर कैपिटा इतना ज़्यादा है दैट दे कैन एक्चुअली स्पेंड एंड गिव बैक टू देयर पीपल. सो आई जस्ट फील लाइक दैट running a country like Pakistan, I personally, this is my personal experience and my personal views, is not easy in a way that there is a lot of लोग बहुत ज़्यादा हैं to kind of जो responsible है. That's A. And B is that I just feel like that जो हमारे पास जो लोग हैं जो यहाँ पर जो talent है वो बहुत ही एक तो मैं समझता हूँ कि उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जाता, या उसको इस तरीके की, या उनको जो है फॉर एग्जांपल हम वो बाहर चले जाते हैं, दे गो, देयर इज अ लॉट ऑफ ब्रेन जो है जस्ट गोइंग आउट ऑफ द कंट्री. तो उस पे अगर हम कोई कोई इस तरीके की अगर हमारा कंट्री कोई अपॉर्चुनिटीज ऑफर करे टू पीपल ताकि वो यहाँ पर रुकें रहें और कंट्रीब्यूट करें टू द इकोनॉमी, देन आई जस्ट फील लाइक दैट इट हैज पाकिस्तान हैज a very promising future ahead, just like India and China. They just need to develop their focus. They need to kind of realign their strategies, readjust their policies with regards to inflationary pressure. For example, inflation, सबको पता है inflationary ये चीजें होंगी with regards to fuel prices. Then maybe government needs to kind of readjust the working week, ताकि लोग अपना उनका फ्यूल का एक्सपेंस या दूसरी चीज़ों के ऊपर एक्सपेंसेस कम हो और चीज़ें. सो आई जस्ट फील लाइक दैट व्हाट पाकिस्तान नीड्स इज एंड व्हाट एनीबडी एट एनी एंटरप्रेन्योर और एनी पर्सन नीड्स इज क्विक एक्शंस. आपने जितना डिले किया यू लूज द अपॉर्चुनिटी. डिसीजंस के तो आपको समटाइम्स देयर कैन बी अ बैड डिसीजन, but you have to be quick in it, otherwise somebody else is going to come in and you are right, take your place and then you're going to disappear. So हसीब से एक सवाल पूछते हैं, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद इनकी एक फेवरेट मूवी या अच्छा सा कोई सिंगिंग पूछते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉबलेसनेस. क्या सजेस्ट करते हैं पाकिस्तानी यूथ को, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द होपलेसनेस एंड जॉबलेसनेस? In terms of I would say that Pakistan has a lot of potential. Pakistani people have immense, skill set, and there are a lot of opportunities out there. And I would say that there's no shortcut to hard work. So just go ahead and kind of find your thing, find what you like, what clicks with you, and just stick to it. Thank you very much, Haseeb. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. It's really enlightening and to have a very deep and meaningful conversation. हसीब से आज का जो टेक अवे है वो 3 अल्फाज हैं जो मैं इसको समराइज कर रहा हूँ आज के सेशन को. नंबर 1 वो है टीम वर्क. अगर आपने एक बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है, you want to be a big entrepreneur and globally entrepreneur in the world, so first thing is you have to develop a winning team. Number 2, you have to be very emotionally intelligent human being. Until you observe and exercise empathy, putting yourself in the shoes of others, you cannot be a good human being. और third जो है वो है action and the immediate and the decision, the timely decisions. जब ये 3 चीजें हो जाएंगी तो you are the
विनर ऑफ दिस वर्ल्ड। इजाज़त दें इजाज़ को CEO टुडे पे और जो है शारजा के ऑफिशियल पेज पे इस बड़ी खूबसूरत मीनिंगफुल कन्वर्सेशन को सुनिएगा और फीडबैक दीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।